इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में हुई जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। कैदियों के लिए बुनियादी ढांचा नाकाफ़ी है, जबकि कैदियों की सेहत के लिए और उनकी ज़हनी सेहत के लिए खदमात तक रसाई महदूद है। कैदियों की बहाली, तालीम और पेशा वराना तरबियत के मौक़े भी नाकाफ़ी हैं। एलामिया में कहा गया है कि तस्लीम करते हैं कि ये चैलेंजेस ना सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई को भी मुतासर करते हैं। ये चैलेंजेस अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासर करते हैं। बामानी और पायदार जेल इस्लाहात के लिए एग्जीक्यूटिव, अदलिया, मुकन्नना में मरबूत राबतों की ज़रूरत है। जेल के इंतज़ाम, इनके लिए वसाइल की फराहमी और जेलों में इस्लाहात करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है। गैर ज़रूरी कैद को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इलामी में कहा गया है कि गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों को कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे। कैदियों की शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। कैदियों पर तशद्दुद, उनसे बदसलूकी और उनकी देखभाल में गफलत के ख़िलाफ़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए। हिरासत में मौजूद अफराद के लिए तालीम के फ़रोग़ और उनकी पेशा वराना तरबियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जेल इस्लाहात के मुत्तफ़िक़ा कौमी मैकेनिज़्म पर अमल दरामद के बारे में बाकायदगी से रिपोर्ट की जाएगी। जेल इस्लाहात ना सिर्फ एक इंतज़ामी ज़रूरत है बल्कि एक आइनी, इंसानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा भी है। एलामी में कहा गया है कि हम जेल निज़ाम बनाने के लिए मिलकर काम करने का अहद करते हैं जो कानूनी, इंसानी और बहाली पर मबनी हो। इस जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के एलामी पर चारों वज़रा आला ने भी दस्तखत किए हैं। कराची के कलसूम बाई वाले अस्पताल में मुबैना इंतज़ामी गफलत सैकड़ों ख़ानदानों के लिए हमेशा के लिए अजियत बन गई। आलूदा और इस्तेमाल शुदा सिरिंजें लगाने से 200 से ज़्यादा मासूम बच्चे HIV का शिकार हो गए। मुतासरा बच्चों की माएँ इंसाफ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ नुमाइंदे अमीन अनवर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबी समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी ने कहा कि तमाम TV चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेज और मुतल्लिक़ा इदारे मुल्की क़वानीन, पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक और मजहबी हसासियत का एहतराम करें। ऐसा कोई मवाद नशर न करें जो माशरे में इंतशार या बेचैनी का बायस बने। अंबिया कराम, सहाबा कराम और अहले बैत की शख्सियात को खाकों की शक्ल में पेश करना आवाम के मजहबी जज्बात को मजरूह करने का बायस बन सकता है। मुतल्लिक़ा हुकाम नशरियाती मवाद की मौसर निगरानी को यकीनी बनाए और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल इस्लाहात पर होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उन्होंने जेलों में इस्लाहात की हैं और विजिटिंग का अहतमाम किया है और कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत फराहम की गई है। हम खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात कर रहे हैं क्योंकि कैदियों की भी हकूक़ होते हैं, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। जो हमारे छोटे छोटे जुराइम में लोग जाते हैं जेलों में और वहाँ पर उनके साथ रवैया गलत होता है तो वो बड़े मुजरिम बनकर ही बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जेलों में इस्लाहात लाई जाएं और बेहतरीन इस्लाहात हों। तो इसी हवाले से हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्द अरेस्ट होते हैं, वो भी इन जेलों में होते हैं, तो जेल की सिक्योरिटी को हमने मुस्तहकम बनाया है और बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि बाकी जो हमारे कैदी हैं वो भी महफूज रहें। जो यहाँ पेशावर में, DI खान में या मुख्तलिफ जेलों में होते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स गरीब होने की वजह से उनके पास विज़िट नहीं कर सकते, तो हमने विज़िट की सहूलत वहाँ उनको फ़राहम की है। जेलों की डिजिटलाइजेशन हम कर रहे हैं। शफाफियत और इंसाफ के फ़रोग़ के लिए तमाम कैदियों के रिकॉर्ड को प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डिजिटलाइज कर दिया गया है। मज़ीद बरा इस निज़ाम को फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के दीगर मुतल्लिक़ा इदारों बिलखसूस अदलिया के साथ भी मुंसलिक किया जा रहा है ताकि मालूमात के तबादले और मुकदमात की पैरवी के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। Judges of the Supreme Court, Chief Justices of the High Court, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a privilege to participate in this National Conference on Prison Reforms convened by the National Judicial Policy Making Committee. I express my sincere gratitude to the Honorable Chief Justice of Pakistan and the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together key stakeholders to deliberate on an issue that lies at the intersection of justice, governance, public safety, and human dignity.
When the state lawfully deprives an individual of liberty, it assumes responsibility for that individual's safety, dignity, health, and opportunity for reform. A prisoner may lose freedom of movement, but not his humanity. The success of a correctional system is measured not only by the secure custody of the inmate, but also by its ability to prepare individuals for lawful and productive reintegration into the society. Across the world, correctional philosophy has evolved from punishment and isolation towards rehabilitation, reintegration, and reduction of recidivism. International instruments such as the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, the Nelson Mandela Rules, the Bangkok Rules, the Beijing Rules, emphasize humane treatment, healthcare, rehabilitation, and special protection for vulnerable groups. Articles 176 and 192 of our Constitution provide for judicial strength in the superior courts, while the strength of the district judiciary is determined by the provincial governments in consultation with the respective high courts. Timely justice therefore requires continued investment in judicial institutions at all levels. The scale of challenge is evident from the fact that more than 2.6 million cases are currently pending before courts across Pakistan. Reducing prison overcrowding and under-trial detention therefore requires sustained strengthening of judicial institutions alongside correctional reforms. Our objective should not simply be to build more prisons. Our objective should be to build a more efficient, humane, and rehabilitative justice system that protects society while preserving human dignity. These principles are fully aligned with the reforms trajectory being pursued in the province of Sindh. I'll quickly take you through the Sindh reforms journey from prisons to correction. Ladies and gentlemen, recognizing that the modern correctional system must go beyond custody and confinement, the government of Sindh undertook a comprehensive reform of its prison administration framework. Sindh became the first province in Pakistan to formally adopt a modern corrections-based framework that recognizes imprisonment not merely as a means of secure custody, but as an opportunity for rehabilitation, behavioral response, and successful reintegration into society. The legislation places prisoner welfare, healthcare, education, vocational training, legal aid, community corrections, family support mechanisms, and institutional oversight at the heart of prison administration. This reflects a progressive shift from a purely custodial model to a comprehensive correction and rehabilitative approach. Today, the Sindh Prisons and Correction Services administer 23 correction facilities across the province. These institutions currently house approximately 27,000 inmates against an authorized capacity of around 14,000. Ladies and gentlemen, the ultimate purpose of prison reform is not incarceration, it is transformation. Rehabilitation remains the cornerstone of Sindh's correction philosophy. Vocational and skill development programs are being expanded across correctional facilities, including training in sewing, carpentry, handicraft, technical skills, digital literacy, and other employable trades. Special programs for women inmates focus on livelihood opportunities, financial inclusion, and post-release reintegration. Sindh has also sought to place education at the center of rehabilitation efforts. Libraries have been established in prisons, and inmates are encouraged to pursue matriculation, intermediate, graduate, and virtual university programs. Educational achievements are recognized through remission incentives under the new law, encouraging learning, self-improvement, and constructive engagement. Education and literacy programs are being strengthened to ensure that incarceration becomes an opportunity for learning and personal development rather than a pathway to further exclusion. Children residing with incarcerated mothers also being provided educational and developmental support to ensure that they are not deprived of opportunities
because of circumstances beyond their control. Our objective is not simply to manage prisons. Our objective is to reduce reoffending, restore human potential, and ensure that individuals leaving correctional institutions return to society as responsible and productive citizens. Healthcare remains one of the most important dimensions of prison reforms. Overcrowding contributes to communicable diseases, psychological stress, substance abuse, and other vulnerabilities that require systematic intervention. In Sindh, every prisoner undergoes medical examination upon admission, and primary healthcare services are available throughout the correctional system. Recognizing healthcare as a fundamental pillar of correctional reform, Sindh has increased expenditure on medicines by over 37% over the last 4 years, ensuring improved access to essential healthcare services for inmates throughout the correction system. Additionally, 25 new ambulances have recently been procured to strengthen emergency medical response capabilities. The government also allocates approximately rupees 2.64 billion annually for provision of nutritious meals to inmates, reflecting a commitment to prisoner welfare and dignity. Particular attention is being given to mental health services. Mental health remains one of the most neglected aspects of correctional administrations worldwide. Prisoners are screened for mental health condition upon admission and referred to specialized institutions whenever required. Psychiatrists from government hospitals regularly visit correctional facilities to provide clinical support. Furthermore, 12 psychologist positions have already been sanctioned and their recruitment is underway. A dedicated drug rehabilitation and mental health center is also planned within the Malil Prison Extension Project. Ladies and gentlemen, prison reform is ultimately about the kind of society we aspire to become. A society committed to justice, a society committed to human dignity, a society committed to public safety, a society committed to giving individuals an opportunity to reform and to rebuild their lives. Let us continue building correctional institutions that reflect the aspirations of modern Pakistan. Institutions that are secure yet humane, firm yet fair, accountable yet compassionate. Institutions that protect society while preserving human dignity. Institutions that do not merely confine individuals but help transform lives. Together, we can build a correctional system worthy of our Constitution, our humanitarian value, and a collective commitment to justice. I once again commend the Honorable Chief Justice of Pakistan, the National Judicial Policy Making Committee, and the Law and Justice Commission of Pakistan for organizing this important conference. May our deliberations today contribute to a safer, more just, and a more humane homeland. Ameen. Thank you very much. Pakistan, Paindabad. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जहाँ पर तमाम वज़राए आला मौजूद हैं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खिताब किया, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। और अभी एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की ख़वातीन के खिलाफ तावान और ज़्यादती का केस। FIR के मुताबिक मुलज़िम ने मुतासरा ख़वातीन से बैरून मुल्क दोस्ती की और उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। 29 जून को दोनों ख़वातीन लाहौर पहुँची और मुलज़िम दोनों ख़वातीन को डिफेंस में वाक़ एक घर में ले गया और एक खातून से ज़्यादती की कोशिश की गई। दूसरी खातून से 3 मुलज़िमान ने ज़्यादती की। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद से, इससे मुतालिक तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे। बताया गया है कि दूसरी खातून से 3 मुलज़िमान ने ज़्यादती की। ख़वातीन का बैरून मुल्क राबता करवा के $1.5 मिलियन तावान भी मांगा गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान कर दिया। IPP इलामी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान
आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल हो गए हैं।